Assalamu alaikum. Hopefully you are doing well, and we are going to talk about the role of media in our country, in Pakistan. Outline what is meant by the media, two major types of media, the objectives of the media as a powerful weapon, media should avoid yellow journalism, lead of social media in the present age, and the last one is conclusion. फर्स्टली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू आवर एसे. मीडिया इज़ द प्लूरल ऑफ मीडियम विच मीन्स अ सोर्स. व्हेन समवन सेज मीडिया वी जनरली एसोसिएट दिस वर्ल्ड टू न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन. कोई भी बंदा अगर मीडिया की बात करता है तो ऑब्वियसली हम इस वर्ल्ड को जनरली एसोसिएट करेंगे न्यूज़पेपर के साथ और टेलीविजन के साथ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. एज वी नो, हमने सब ने पढ़ा है, जो भी जर्नलिज्म से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन सब ने पढ़ा है कि मीडिया में क्या चीज़ आती है. प्रिंट मीडिया आता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है. प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड अदर आइटम्स इन प्रिंटेड फॉर्म्स. Electronic media includes radio, television, film and internet. In ancient times, newspapers were designed to convey news of one area to many other different areas. Later, recreation was included in those newspapers. TV was specially designed for entertainment. Later, it proved as a best way of conveying news. In this present era, many TV news channels are working well in this regard. The role of media in any society cannot be denied. In this modern world, the media has become a powerful weapon, and it is reality कि हमारा जो मीडिया है वो एक पावरफुल वेपन है. और सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है हर चीज़ में वो मीडिया है, जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हर एक चीज़ को ठीक करने में, हर एक चीज़ को ख़राब करने में रोल सबसे बड़ा मीडिया का ही होता है. टोटली डिपेंड्स ऑन और गवर्नमेंट कि वो किस तरह के फैसले करवाती है. और हमारा मीडिया जो है वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का ही यूज़ करता है और गवर्नमेंट का वो ख़रीदा हुआ है. जो गवर्नमेंट चाहेगी वो खबरें चल जाएंगी. सो ये रियलिटी है, हमें इसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए और बिल्कुल है भी, फैक्ट है ये. इट हैज़ द पावर ऑफ डिमोलिशिंग एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट्स. इट कैन चेंज द फेट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट particular society. It forms public opinions. It can also deform the public opinion. In Pakistan, media is totally free. It has a lot of freedom of expression. The former Pakistani President Pervez Musharraf issued licenses to many private TV news channels. These channels worked well besides the state channel. The real function and role of media is to criticize the policies of any government. It should have a critical watch over the decisions and actions of any government. It has the right of positive criticism. In this way, it can reform any government. Media should avoid yellow journalism. The main sources of income of these TV channels is advertisement. These advertisements come from many business tycoons or from the government officials. They affect the freedom of expression and make the media speak their particular language. In this way, media becomes the mouthpiece of the powerful people. It conveys their thoughts and ideas. This condition forms a negative condition in any society. It is not good for the country. The function of media must be to convey the news with full validity. It is observed commonly that many newspapers and news channels cover one news in different angle. Sometimes to rank the channel, they break the wrong news. Obviously, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. Sometimes to rank the channel, they break the wrong news. मैं 3-4 दिन पहले देख रहा था 24 न्यूज़ HD, एक बहुत बड़ा चैनल है, आप सबको भी पता है. उसका थंबनेल लगा हुआ था वैक्सीन लगवाएं और मोबाइल ले जाएं. वैक्सीन लगवाएं और फ्री मोबाइल ले जाएं. अब उसका मतलब क्या था? जब हमने वो न्यूज़ ओपन की तो उसमें क्या था कि वैक्सीन लगाने वाले जितने भी लोग होंगे, जो सेंटर्स बनेंगे या वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी लाइसेंस लेना चाहे कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा अपनी लैब पे बैठ के या किसी भी हॉस्पिटल में या कोई भी, उनके लिए गवर्नमेंट मोबाइल प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप लोगों को वैक्सीन लगाते हैं, आप वैक्सीनेशन सेंटर ओपन करते हैं तो आपको मोबाइल दिया जाएगा टू स्टोर अ डाटा. आपने रिकॉर्ड रखना है उसका, तो आपको मोबाइल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. लेकिन वो लोगों की एक अट्रैक्शन के लिए थंबनेल लगाया गया कि लोग ये समझेंगे कि मोबाइल मिलेंगे हमें अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो लोग वो न्यूज़ देखेंगे. सो ये चीज़ यहाँ पे ही हमने देख ली है. This thing creates chaos among the audience. Social media has kicked off the monopoly of television, news channel and newspapers. Now the people have more new ways of measuring the validity of any news and of expressing their ideas and thoughts. Social media has made everything open.
Now it has become very difficult for the politicians to hide their corruption and other negative activities. Everything has become public. Some people use the social media negatively. They spread false news and convey wrong news through it. This action creates a negative impact on the society. It is due to media that the world has become a global village. Through media, we come to know of any happening around the world. In this modern age, its importance cannot be denied at any rate. To sum up the topic, we can say that media can play constructive as well as destructive role in society. It's a powerful weapon which can deforms the governments. It can level the public opinion against any issue or problem. It can solve the problems of the layman very effectively. It should work freely. ये था जी हमारा लास्ट टॉपिक. अल्लाह ताला सबका आमीन नासिर. अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे. अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ अता फरमाए. मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं. अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अच्छे नंबर्स के साथ, और अच्छी अच्छी डिग्रीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएं. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप सबकी मेहरबानी होगी. वीडियो को लाइक कर दें तो ये भी आपकी मेहरबानी होगी. मेरी दुआ में आप हमेशा रहेंगे. अल्लाह हाफिज़.